Hello dear students, welcome back to the Crystal International Public School, Standard 7. Subject Science, Chapter 4, Heat. Okay, in the last video we have seen about the thermometer. Okay, we have seen about the measurement instrument of measuring the instrument, that is temperature, that is called thermometer. We have seen, but before that we did one activity, and then after we will go through your next topic. So let's start and let's revise it first, that what is hot and cold. What is hot and cold? And I told you to do one activity at your home, that you have to take a beaker, three beakers you have to take, and fill one first beaker by hot water, second beaker by cold water, and third beaker by mix up of hot and cold water. Okay, mix up of cold plus hot. Okay, and then after you insert your left hand to the hot, right hand to the cold, and then after keep it for 2 or 3 minutes, and then after remove it, and then both the hands you have to insert into the third beaker, that is filled by hot and cold both mix up of water. Then what you will observe, that your left hand that is immersed already inserted into the first beaker, that will feel coldness there, okay, into C, and your right hand that is inserted already into the cold water, that will feel over here the hotness here. Okay, it means what, that you cannot recognize that it is whether it is hot, whether it is cold. So sense of touch cannot distinguish this hot and cold weather or temperature. Okay, so to measure the accurate temperature, we have the one instrument, that is thermometer. One instrument है thermometer, that gives you the perfect measurement of temperature. And I hope so that you all have seen, and we have seen the structure of the thermometer. Yes or no? Yes, in the last video. So here thermometer is what? Temperature is measured by a device that is called thermometer. And you might have seen the thermometer into the hospitalized. So we will see here that we will learn here the clinical thermometer. About. And those thermometer which is used by the doctors. Okay. So measuring temperature, we have seen that in the last video, that is clinical thermometer is what that doctors are using for measuring our body, that if someone is suffering from the fever from your home, and you are going to the doctor, you are going to the doctor, and first of all doctor, what will they do, that they will measure the temperature first, okay, by thermometer, and then after he or she gives you the medicines. So here we will see the structure of the thermometer, that what is it. So let's start. A clinical thermometer in which, here can you see a bulb type of structure that is filled by the mercury. Okay, now mercury is what? मर्क्यूरी ऐसी एक मेटल है, सो सॉलिड में नहीं आती, नहीं गैसेस में आती, वो लिक्विड फॉर्म में आती है, बट मेटल कही जाती है, ठीक है. सो एंड रूम टेम्परेचर में वो मेटल जो है वो इन द रूम टेम्परेचर दिस मर्क्यूरी मेटल इज व्हाट, इन अ लिक्विड फॉर्म. ओके, so here bulb like structure that is filled by mercury, and here one very small wire, thin wire you will see, that is attached to the mercury, that is also called mercury wire. Okay, and then after here the two scales has been given. Here two scales are given, 1 and 2, upper scale and lower scale.
Upper scale gives you the in the form of degree Celsius temperature, and lower scale gives you the degree Faraday temperature, and temperature in the form of degree Faraday. Okay, and nowadays in India degree Celsius is very useful, and we have adopted the degree Celsius form. Now we will see the reading a thermometer, that how to read the thermometer, how to read the scale. Okay, that we will see over here. Reading a thermometer. Let's learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Note down the number of divisions. Suppose I just wanted to tell you over here. Suppose here I am writing 34 and here I am writing 35. Okay. So if 5 divisions are coming in between 34 to 35, that is 1 2 3 4 5, that is 1 2 3 4 5. If 5 divisions are there coming into in between 34 to 35, then you have to take a measurement of first division, that is 0.2. So you have to add into 34 0.2. So you will get 34.2. Here also you have to add 0.4. So you will get here 34.4. Here you will get 34.6. Okay. Here you will get 34.8. And here you will get the 35. Okay. It means what? That one division equal to 0.2. So 0.2, 0.2 you have to add it to it and you will get the answer. But if you have 10 divisions in between 34 to 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, 10 divisions you have in between 34 to 35, then you have to take a one division equal to 0.2, 0.1. This is 0.2, then 0.3, then 0.4, then 0.5, then 0.6. This is 0.7, this is 0.8, 0.9 and 1. That means what? That you have to take a add 0.1 into 34, then you will get here 34.1. Here 34.2, 34.3, 34.4. Likewise, you will get the 35. So, if you get 34 to 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. And if you get here anything, your mercury is raising, and if you get the here this mark, then you have to count, that is 1, 1, 2, 3 and 4. So here your answer will be 34.4. Okay. So likewise you have to count. So here given that small division can read 1 by 5, that is 0.2 degrees Celsius. 0.2 degrees Celsius. So doctor will wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. Antiseptic solution means what? कि सपोज हम यहाँ पे आए, हमें डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद जो दूसरा पेशेंट आएगा तो उनको वही तो थर्मोमीटर नहीं लगाएंगे ना डॉक्टर्स. सो इसीलिए डॉक्टर्स क्या करेंगे, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करेंगे. इट मीन्स व्हाट कि जो भी जर्म्स उस पर रखे हुए होंगे, सो दैट जर्म्स विल बी किल्ड आउट. Okay, so antiseptic solution is used over here for washing the thermometer. Hold it firmly and give it a few jugs. हाँ, उसको अच्छे से वो लोग होल्ड करेंगे and then after doctor will give it a few jugs. मीन्स few jugs उसको देंगे. It means what कि जो mercury है वो यहाँ वहाँ पे सेटल डाउन हो जाए. ठीक है.
and the jerks will bring the level of mercury down. I just told you that mercury का level down करने के लिए उसको jerk दिया जाता है. Okay. Ensure that it falls below 35 डिग्री सेल्सियस, कि उसका ऐसे जर्क दिया जाएगा कि उसका जो 35 उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो आ जाए. ओके, सो नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग. तो बल्ब को हमारे टंग में रखा जाता है. आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, एंड देन आफ्टर वी आर डॉक्टर्स आर नोटिंग द रीडिंग. So this is your body temperature, and the temperature should always be started with its unit degree Celsius. So temperature is given into the unit of degree Celsius. So what did you record as your body temperature? तो normal temperature हमारा human body का कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस. Okay, note that the temperature is started with its unit. यूनिट के बिना नहीं लिखना है. एंड नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टार्टेड इज 37 डिग्री सेल्सियस. तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉडी का है वो कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. ठीक है. मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम योर फ्रेंड्स एंड विथ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. So is the body temperature of every person is 37 डिग्री? क्या सबके 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होंगे? नहीं. The temperature of every person may not be 37 degree Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Okay. So actually what we call normal temperature is the average body temperature of large number of healthy persons. Normal temperature क्या है? कि average body temperature of a large number of healthy persons. हमने जो जितनी भी बॉडी का टेम्परेचर लिया तो उसका जो एवरेज निकलेगा वो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा. ओके, सो द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. दिस इज द यूज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. दिस इज द यूज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर that the clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. Okay. Okay, so sir, the clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. See, जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो 35 से नीचे नहीं जाना चाहिए या तो फिर 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए. It means it should be come in between 35 to 42. So this is the reason that this thermometer has the range of 35 to 42. So this is very important line, that is 35 to 42. The body temperature should be. Okay. Now laboratory thermometer. हम अब laboratory thermometer देखेंगे कि laboratory thermometer कैसा आता है. See, can you see the structure of laboratory thermometer? See, like this over here. If you should have, then I will show you. So laboratory thermometer is what? How do we measure the temperature of other objects? ये तो ह्यूमन बॉडी का था, लेकिन अदर ऑब्जेक्ट्स मीन्स मुझे कुछ सॉल्यूशन का टेम्परेचर लेना हो, पानी का टेम्परेचर लेना हो, वाटर का. ओके, घर पे कुछ चीज़ का टेम्परेचर लेना हो, देन हाउ डू वी मेजर इट? So that is called laboratory thermometer, and for this purpose there are other thermometers. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. The teacher will show you. Yes, I will show you this thermometer. Okay. So look at it carefully and notate the highest and the lowest temperature it can measure. See, can you see over here from here to here? It means what? That is, its scale is started from 0 to -1, 0 to 110. इतना सारा उसका टेम्परेचर जाता है. सी, यहाँ पे लिखा है ना -10 to 110. सी, its range of laboratory thermometer is generally from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. As you
did in the case of clinical thermometer? Find out how much a small division in this thermometer. Okay, यहाँ पे कितने small divisions है? 10 small divisions are there. So 1 small division is equal to 0.1. Okay, here in between 10 divisions, 10 small divisions are there. So 1 upon 10 is equal to 0.1 degrees Celsius. Okay, so you would need this information to read the thermometer correctly. Let us learn how this thermometer is used. Okay, so take some tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. So take some tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. अब आपको थर्मोमीटर उसको ऐसे इमर्स करना है कि जो उसका बल्ब है वो बॉटम से टच ना हो और उसकी जो साइड वॉल्स है उस पर भी टच ना हो. ठीक है. होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली. होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन ओनली. ओके. ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर. वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी. आपको जहाँ तक वेट करना है जब तक उसका जो मर्क्यूरी थ्रेड है जो वो स्टिल स्टेडी ना हो जाए. ठीक है. देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर. सी picture it is given over here, that is this is the beaker of plastics also, it can be, or glass also. Okay, it is filled by the water. These are the waters. Okay, and then after this thermometer inserted immersed into it and it is holding by vertically. Okay, in vertically position it is holded, and then after it see its bulb is not touching into the bottom and also side walls. Okay, so this is the position. This is the position that you have to hold it for laboratory thermometer. Don't forget it. So note the reading. This is the temperature of water at the time. Compare the temperature of water recorded by each student in the class. Bhujan now understands why clinical thermometer cannot be used to measure high temperatures. See, Bhujan now understands why clinical thermometer cannot be used to measure high temperatures. वाई बिकॉज हाई टेम्परेचर वो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है वो थोड़ा बहुत लिमिटेड रेंज है. ओके, एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर में 110 तक का रेंज है इसीलिए. ओके, बट स्टिल वंडर्स वेदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द हिज बॉडी टेम्परेचर. हाँ, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या बॉडी टेम्परेचर मेजर करने में यूज़ करेगा, यूजेबल है. Let's see about it. So are there any variations in the readings? Discuss the possible reasons. Let us try to answer this question. Take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins fall? Okay, see. यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो कोल्ड वाटर लिया, कोल्ड मीन्स टैप वाटर लिया. ओके, लास्ट एक्टिविटी में, एंड देन यू डिड इट एंड देन यू कैन कंसिडर दैट व्हाट इज द रीडिंग ऑफ इट. बट एक्टिविटी 4.5 में क्या किया है कि हॉट वाटर लेना है आपको और हॉट वाटर में आपको मर्क्यूरी दिट इज थर्मोमीटर ऐड करना है, इमर्स करना है, एंड देन आफ्टर नोटिस यू हैव टू नोटिस दैट मर्क्यूरी थ्रेड जो है वो स्टेडी कब होता है. जो जैसे स्टेडी हो तो आप उस बीकर में से थर्मोमीटर ले लेंगे और रीडिंग लेंगे ना, तो क्या होगा कि मर्क्यूरी सडनली नीचे आ जाएगा. ओके, उसका जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगा. ओके, इट मीन्स व्हाट, एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल. ओके, तो उसका जो लेवल है वो फॉल होने का शुरू हो जाएगा. सो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर. तो हमें टेम्परेचर कब मेजर करना है, जब वो वाटर में ही हो. ओके, सो यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द
reading, can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? No. A clinical thermometer is only used to measure the human temperature of the human body, but this thermometer cannot be used this thermometer cannot be used to measure our body temperature. Why? Because जो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हमारा मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा कि हम ले तो रहे, टंग में रख रहे हैं, ठीक है, then after it will give you the reading, but as you will remove, then mercury level will start to fall again. Okay, and क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है, दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द क्लिनिकल थर्मोमीटर टू लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ओके, सो क्लिनिकल में क्या होगा कि आप जो थर्मोमीटर लोगे तो भी उसका जो लेवल है वो स्टेडी रहेगा. ओके, एंड देन डॉक्टर कैन रीड द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी. ओके, so laboratory thermometer cannot be used to measure the body temperature for a clinical purpose. Bujo wonders why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object. तो उसका लेवल क्यों चेंज हो रहा है, चेंज क्यों हो रहा है? Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of mouth? यहाँ पे भी बोला गया है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो हम माउथ में से थर्मोमीटर ले लेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है, उसका लेवल जो है वो राइज क्यों नहीं हो रहा या फिर फॉल क्यों नहीं हो रहा. ओके, दैट वी विल सी. ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन. आपको अगेन ऑब्जर्व करना है क्लिनिकल थर्मोमीटर. डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? आपने ये देखा, ये जो है ना, ये जो है वो किंक है, किंक नियर द बल्ब. What is the use of the kink? It prevents mercury level from falling on its own. It means ये जो क्या करता है, mercury level को fall करने से उसको prevent करता है, वहाँ पे stop करता है उसका level change करने में. ठीक है, that's why doctors are giving the few jerk to the thermometer. It means कि उसका जो level है वो set कर पाए 35 से नीचे, below the 35. Okay, but here kink is given into the clinical thermometer by which kink prevents the mercury to change its level. Okay, so level from falling on its own. So this is the king, and yes, nowadays you see this one of this strip also. So there is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of it if a thermometer breaks. These days, digital thermometers are available which do not use mercury. It means what कि यहाँ अभी नावाडेज ना मर्क्यूरी ना थोड़ा पॉइजनस है, तो जो थर्मोमीटर ब्रेक हो गया, वो तो ग्लास का है बना हुआ है, तो जो थर्मोमीटर ब्रेक हो गया तो मर्क्यूरी स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड होने के लिए होगा तो वो पॉइजनस है. दैट मीन्स कि डॉक्टर के लिए हार्मफुल है, ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है. इसीलिए नावाडेज जो है ये डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है. डिजिटल थर्मोमीटर में आपको एक्यूरेट रीडिंग दे देते हैं कि डिजिटली कि कितना है. ओके, सो हियर डिजिटल थर्मोमीटर इज गिवन. नाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है? व्हाट इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट? Let's see about it. Transfer of heat is what? You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. So,
you can understand that in both the cases the heat flows from a hotter object to a colder object. Let's see about it. ट्रांसफर ऑफ हीट, इट मीन्स व्हाट कि आप कोई कंटेनर को गैस स्टोव पे रखते हो, ओके। तो गैस स्टोव ऑन करने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा कि गैस स्टोव की जो हीटनेस है वो ट्रांसफ़र किस में होगी, वो कंटेनर में होगी। सपोज एल्यूमिनियम कंटेनर रखती है तो एल्यूमिनियम कंटेनर विल बिकम अ हॉट, वाई ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द गैस स्टोव टू द कंटेनर, ओके। तो ये जो कंटेनर था वो कोल्ड था पहले, ओके, बट उसको हीट दी, इट मीन्स हीट का ट्रांसफ़र हुआ तो वो हॉट हो गया। आफ्टरवर्ड्स स्विच ऑफ द गैस स्टोव एंड देन आफ्टर यू मार्क इट, keep it as it is aside. So hot container will become a cooler or cold. Why? Why? Because the surrounding it, the temperature is cold. टेम्परेचर इज कोल्ड है, तो कंटेनर के जो सराउंडिंग जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है, ओके। तो वो कूलनेस क्या होगी कि वो कूलनेस उसमें वो जो बर्तन है वो कंटेनर है उसमें ट्रांसफ़र होगी, और जो उसकी हीट है, हॉटनेस है, वो हॉटनेस कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, एयर में ट्रांसफ़र होगी। इट मीन्स व्हाट कि ये जो हॉट एंड कोल्डनेस जो है वो ट्रांसफ़र होगी, तो उससे उससे क्या होगा कि वो जो कंटेनर है वो स्लोली 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 कोल्ड हो जाएगा। इट मीन्स वो ट्रांसफ़र फ्रॉम हीट वाटर टू कोल्डर, यहाँ पे कहा है ना, हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। In fact, in all cases that flows from a hotter object to a colder object, how does it flow? Let us investigate. अब पहेली का क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, पहेली आस्क्ड, does it mean that heat will not be transferred if the temperature of two objects is the same होंगे two objects, तो क्या वो हीट ट्रांसफ़र होगी? लेट्स सी। टेक अ रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, say it aluminum or iron. Fix a few small wax pieces on the road. These pieces should be at nearly equal distances. Clamp the road to a stand. If you don't find a stand, you can put one end of the road in between bricks. Now hit the other end of the road and observe it. ओके सी, यहाँ पे बताया गया है कि एक रोड है, रोड को आपको ब्रिक्स के बिटवीन रखना है, और इन बिटवीन ब्रिक्स जस्ट कीप इट लाइक दिस, इन लाइक दिस स्ट्रक्चर, एंड देन एट द एंड ऑफ द रोड you hit it, okay, give the fire. Now hit the other end of the road and observe what happens to the wax pieces. wax pieces का क्या होगा, यहाँ जो wax pieces हमने दिया है तो वो क्या होगा, so do these pieces begin to fall, which piece falls the first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? ओके, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी। तो ये जो सारे वैक्सेस है, ये जो सारे वैक्सेस है, तो कौन सा वैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल होगा और मेल्ट होगा, जो नियरर टू फ्लेम है। The wax which is nearer to flame, that will melted first, okay. So the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. Okay, this definition is very important for your exam. That what is conduction? The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. So in solids, generally the heat is transferred by the process of conduction. कंडक्शन प्रोसेस से ही होती है। तो कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स, यहाँ पे कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स दिया गया है। सो मैनी थिंग्स हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू इट, दैट इज़ वन स्पून इज देयर, and one is it is, what is it called, yes,
it is scale is there, pencil is there. Okay. So different things has been inserted, immersed into the water, and let's see that heat is transferred by the process of conduction. So do all substance conduct that easily? सारे के सारे सब्सटेंस उसको कंडक्ट इजीली करेंगे? नो. You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle, so it will not transfer the heat from the plastic or wooden handle. So can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? Without getting hurt, can you hold this hot pan? No, you can't hold this hot pan because you will hurt. It means hotness is coming into the pan. Okay. Now activity 4.7 it is given over here, and let's see about it, that what is it say. So activity 4.7 we will see in our next video. So I hope so that you guys all enjoy my video, and if you don't understand then please note down the questions answer in your notebook, and then we will see later on. And I hope that you all understand, and please take care during the corona and at your home. So bye everyone.